into a relationship जो हमने कल डिस्कस किया था. I think I should have that page also. Just 1 second. Yes. So yesterday we discussed that we need to convert these equilibrium into a relationship between this income and the interest rate. तो हमें पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम में यही वाला गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना है. नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डायग्राम वी नीड टू प्लॉट द IS curve taking into account income and the interest rate. This is what we'll be doing. So coming back to the fresh page. Yeah. So first we'll draw the गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम जैसे हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं. प्लीज आप लोग साइड बाय साइड कर लीजिए. So on x-axis we take income or output which we represent by y. On y-axis we take aggregate demand, and then we have this production line and we have this output line. So sorry, this aggregate demand. So this is aggregate demand, say 1, as a result of which this intersection point, this will give us say y1. Now since we know that the equation जो हमने कल derive की थी IS equation, that is y is equal to a bar minus bi divided by 1 minus c plus ct. This is what we derived yesterday using all the components, which means कि अभी हम यहाँ पे जो autonomous component यहाँ पे अभी तक हम c bar लेते हुए आए थे, या फिर हम लोग जो total जो autonomous component है जो हमने combine करके a bar बोला था, या तो हम उसको display कर रहे थे, but now this autonomous component will be a bar minus bi. ये जो हमारा पूरा numerator है, this will be plotted over here as this does not depend on the income level. So this will be a minus bi. Guys, is this clear? Why are we plotting a minus bi on y axis जहाँ से हमारा aggregate demand start हो रहा है, that is the intercept is a bar minus bi. Are we all clear? Why are we taking this intercept over here, a bar minus bi? किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो. a bar minus bi हमने क्यों लिया है, सबको क्लियर है? Guys, I want some response please. It's not clear, Madhusudan. Okay. So, Madhusudan, do you remember that when we used to take aggregate demand in the goods market equilibrium, we used to take here C bar. हम यहाँ पे C bar लेते थे, ये याद है आपको? Yes. So, which means कि जो भी हमारे components income के ऊपर depend नहीं करते हैं, क्योंकि ये aggregate demand actually हमारा क्या है, जो हमने goods market equilibrium में बोला था, y is equal to aggregate demand बोला था, aggregate demand is c plus I plus g. इसी चीज को solve करके हमने कल ये IS equation derive की थी. So over here we said that investment is now dependent on this I bar minus bi. So these are the components which are not dependent on the income. So ये जो हम A bar बोल रहे हैं, A bar comprises of all the autonomous components, exogenous components which are not dependent on the income level, such as I bar, such as G bar, such as CT bar जो हमने कल डिस्कस किया था, and minus BI. यही तो था ना हमारा autonomous. Were you there in yesterday's class, Madhusudan? So now are you able to relate why are we taking over here this A bar minus BI? Are you able to relate now? So now we are saying जो हमने पहले गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया था उसमें हमने ये इंटरेस्ट रेट वाला कंपोनेंट नहीं लिया था. अब हम ये इंटरेस्ट रेट वाला कंपोनेंट ले रहे हैं. इसका मतलब दिस AD1 is C bar C plus I plus G, wherein we are saying that suppose if interest rate is at level I1, if interest rate is at level I1, then the investment level is at I1, capital I1, and the aggregate demand is at AD1. So we are going to plot the same thing in the different curve. So say
So here we are taking y or output or income on the x-axis. मुझे लग रहा है ये थोड़ा ज़्यादा light हो गया. I'll use this color. So on the x-axis and on the y-axis we are going to take interest rate. So we are saying that when the interest rate is at the level I1, when the interest rate is at the level I1, इसको थोड़ा ऊपर बनाना I1. When the interest rate is at the level I1, we are getting the income at the level Y1. We are getting equilibrium income at level Y1. So this represents this point E1. This even represents the combination of interest rate and the income level in which this goods market is in equilibrium. यहां तक समझ में आया है? यहां तक सबको समझ में आया है? मैं ड्रॉ करने का टाइम दे दूंगी, पहले प्लीज समझ लो. Guys, did you understand till here? We are saying that at interest rate I1, there is investment level capital I1. This is leading to the aggregate demand 1, which comprises of C plus I1 plus G, and using this aggregate demand, we are getting the equilibrium E1. So we have plotted this point directly E1, taking into account the interest rate I1 and Y1. Now we are saying that suppose Nishant, you have been allowed the entry, but you will not be given attendance. Now we are saying that suppose interest rate reduces. Suppose this interest rate reduces to I2 level. With the reduction in the interest rate, as we discussed this relationship I equal to I bar minus BI. तो जैसे ही हमारा इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो गया, इन्वेस्टमेंट पे क्या इम्पैक्ट होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होनी चाहिए या डिक्रीज होनी चाहिए? इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट, if there is a reduction in the interest rate, what will be the impact on the investment? I'm waiting for more replies, guys. Yes, the investment will increase. We will reach the investment level I2 such that this I2 is greater than I1, which means the aggregate demand is also going to reduce. As पहले जो हमने AD1 बोला था, that was at Y1. Now this AD2 will be at I2 plus G. So there will be an increase in the aggregate demand also. With the increase in the aggregate demand, there will be an upward shift. There will be an upward shift in the aggregate demand. Now we are saying that this is the level A bar minus BI2. This I2 represents reduction in the interest rate जो हमने part 2 of the diagram में display किया है. At this reduced level of the interest rate, there will be an increased level of investment and there will be an increased aggregate demand. With this increase in investment and increase in the aggregate demand, there will be an increase in the equilibrium of the goods market also. Theoretically explain कर दूंगी, पहले diagrammatically हम explain कर रहे हैं. So this will lead to an increase in the output level, and we are going to reach Y2. And we are going to reach Y2. Theoretically explanation ये है कि जब भी हम लोगों का aggregate demand increase हो जाती है, with the increase in the aggregate demand, business firms, if they have the resources, business firms will also try to increase their output level, their production level. In order to increase the output and the production, they are going to employ more factor services, which means that they have to increase the income level also. As a result of which there is an increase from Y1 to Y2, that is there is an increase in the production level and the income level.
Guys, are we clear with this? The first part of the diagram. ये diagram पूरा clear है. First part. Shift clear hai, and how we moved on from E1 to E2. Is that clear? So this AD2 comprises of C plus I2 plus G. Okay, now people who want to note down, अभी हमारा second part of the diagram complete नहीं हुआ है, but क्योंकि इस पे मैंने ये चीजें लिखी हुई हैं, ये अगर आपको लिखनी है तो लिख लो. अभी मैं इसको दोबारा ज्वाइन करके नीचे IS कर्व प्लॉट करूंगी. So if you want to write these things, please write. I want to rub it off. When you are done writing, let me know done, so that we can continue. If there is any doubt, please ask. Just write done when you are done noting it down. Okay, Madhusudan. All right. So most of the people are done with this. So I'll just start with that now. Okay, Diva, we are waiting. Let us know when you are done. Diva, मैं डायग्राम रब नहीं करूंगी, सिर्फ ये जो मैंने सर्कल में लिखा है ना, इसको कॉपी कर लो. डायग्राम के लिए आई गिव यू मोर टाइम. आई हैव नॉट कंप्लीटेड द डायग्राम येट. अगर डेरिवेशन आप लोगों के एग्जाम्स में आता है तो ये डेरिवेशन पूरा 10 नंबर का आ सकता है. सो ओके, नाउ आई एम रबिंग जस्ट दिस थिंग. Now we are just going to say this is our I2 level, and we are just going to join these points. This is the new equilibrium with the reduced interest rate. Now, when we are joining these points, we'll be getting the IS curve. When we'll join these points, we will get IS curve. This is IS curve. IS curve represents goods market equilibrium. That is where Y is equal to aggregate demand, but it represents taking into account the interest rate and income. So we can say that IS curve represents various combinations of interest rate and income in which goods market is in equilibrium. Various combinations of interest rate and income in which goods market is in equilibrium. Guys, this is the entire diagram. Now, ये जो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आर्बिट्ररीली लिया है ना, ये इंटरेस्ट रेट हम लोग मनी मार्केट में डिराइव करते हैं. इफ यू गाइज रिमेंबर, मनी मार्केट हमारा होता है मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई इंटरसेक्शन विच लीड्स टू द डेरिवेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट. सो ये हम एज्यूम कर रहे हैं कि आर्बिट्ररीली सपोज ये यहाँ पे 10% पे है, 20% पे है, इसके रिलेटिवली हमारा इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन हुआ है, से 5% डिक्लाइन हुआ है. पर ये जो हमारा इंटरेस्ट रेट है ये डिटरमिन होता है मनी मार्केट के अंदर. इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो आउटपुट, जो ये Y है, ये हमारा गुड्स मार्केट में डिटरमिन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट हमारा मनी मार्केट में डिटरमिन हो रहा है. तो हमको, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्राइस एंड डिमांड, डिमांड एंड सप्लाई इंटरसेक्शन के वजह के बाद हम लोगों को इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम डिमांड मिलता है. उसी तरीके से हम IS कर्व हमने डिराइव किया, LM डिराइव किया. फाइनली हम लोग इनको इंटरसेक्ट करेंगे एंड विल गेट टू नो द इक्विलिब्रियम विल डिटरमिन द इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट एंड द इक्विलिब्रियम इन द गुड्स मार्केट. सो ये जो Y है ये गुड्स मार्केट में डिटरमिन होता है एंड इंटरेस्ट रेट इज डिटरमिन्ड इन द मनी मार्केट. गाइस, आई एम गिविंग यू सम टाइम. You can note this down. I will share the PDF also, but I would like if you maintain your own notes and just refer to PDF for your doubts. Acha, you can write it down and let me know when you are done. In this case, we have taken the case wherein interest rate has reduced. हमारा ये भी केस हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो,
जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट रिड्यूस करेगा, एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस करेगा, आउटपुट लेवल रिड्यूस करेगा, उस केस में भी हमारा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग आईएस कर्व डिराइव होगा। इनफैक्ट ब्लैंक चार्ट के अंदर हमें इंटरेस्ट रेट इंक्रीज के पर्सपेक्टिव से ही दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, इट विल अल्टीमेटली लीड टू द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। All right, guys, let me know when you are done writing everything. Then I'll have to explain some more points in this diagram. Okay, Diva. Let's wait for others also. All right, Udit. Okay. Okay, so most of us have like completed this. Now there is some other thing. I'll just rub these things. Just to make it more neat, I've rubbed this off. So now we know that there can be some points such as, there can be some points such as over here. अगर हमारा suppose इस point पे इनकम या आउटपुट लाई करता है, अगर हमारा इस पॉइंट पे इनकम या इनपुट लाई करता है, सो दिस इज द पॉइंट वेयर y is greater than aggregate demand, where y is greater than aggregate demand. Similarly, अगर हम इस इक्विलिब्रियम पे हैं पर हम बोल रहे हैं हमारा सपोज यहाँ पे इनकम लाई करता है, as we know that this dark green, this is aggregate demand curve, and this blue line, this represents the production. So if we are say at this point, then this again represents a point where y is greater than aggregate demand, which means कि हम लोगों का IS कर्व के राइट हैंड साइड पे, IS कर्व के राइट हैंड साइड पे यहाँ पे सारी जगह y is greater than aggregate demand. This represents that there is excess supply of goods towards the right, all the right of the IS curve, all the points represents that the production output is greater than aggregate demand, and this represents excess supply of goods, which means कि हमारा जो भी इन्वेंट्री है, फर्म्स के पास इन्वेंट्री स्टॉक ज्यादा रहेगा. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे अगर हम कहीं इकोनॉमी अगर इस पॉइंट पे से ए पॉइंट पे कहीं पे लाई कर रही है, सो दिस विल बी द पॉइंट जहां पे हमारा आउटपुट लेस है जितना होना चाहिए इकोनॉमी में. दिस आउटपुट इज लेस एज कंपेयर टू व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द इकोनॉमी. सो वी कैन से दैट at all these points income output or production is less than the aggregate demand. आप देख पा रहे हो ना कि एग्रीगेट डिमांड कर्व हमने ब्लैक से बनाया है और ये जो हमारा प्रोडक्शन है ये ब्लू से है. सो दिस ब्लैक कर्व लाइज अबव दिस ब्लू लाइन, which means that aggregate demand is greater than the production or the output in the economy. So we say that all the points towards the left hand side of the IS curve represents excess demand of goods. That is the points where income or output and production is less than the aggregate demand. So this represents excess demand of goods in the economy. Right hand side represents excess supply of goods in the economy. यहाँ पे हमारा ये जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है,
एक बार प्लीज स्क्रीन पे देखना, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट वेयर y इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड. All the points towards the right of this represents excess supply of goods, that is y is greater than aggregate demand, and all the points towards the left of this curve represents that y is less than aggregate demand, that is there exists excess demand of goods in the economy. Are we clear with this concept? Are we clear with this concept, guys? If there is any doubt, please ask. Please ask if there is any doubt. Okay, just note it down. Same diagram में ही करना है. Just note it down. Then we'll discuss regarding the shift of the IS curve and we'll solve one numerical. Just let me know when you are done. I'll move on to the next page. Let me know when you are done, guys. I'll move on to the next page then. Nice to see your message, Karan. Okay, Simran. All right, Harsh. Okay. So can we move on? Diva, are you done? Mehul, which point you want me to explain again? Excess supply of goods and excess demand of goods. This point. Okay. So I hope you can see this. मेरे को कुछ रब करना पड़ेगा. एक सेकंड मैं दोबारा explain करती हूँ. Mehul, it is getting very difficult to rub it off. I'll try to explain here. Suppose that the economy at this current level, हम लोग अगर जो हमारा equilibrium है वो E1 पे derive हो रहा है, जहाँ पे हमारा equilibrium Y1 होना चाहिए. But suppose that the economy is actually functioning at A. मतलब जो हम लोग डिमांड कर रहे हैं वो A पे डिमांड कर रहे हैं, पर जो हमारा प्रोडक्शन है वो B पॉइंट पे हो रहा है. The production is happening at B point. So this A is aggregate demand curve and this B is the production in the economy. So we can say that aggregate demand, since A is lying above this B point, so we can say that aggregate demand is more than the output in the economy. Hence, we get this equation that aggregate demand is greater than the output and production in the economy. So, जो हमारा equilibrium IS curve पे E point पे होना चाहिए था, पर हम इसके लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं. अगर हम कहीं पे भी यहाँ लाई करते हैं, इसका मतलब एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स हो रहा है. मेहुल, इतना ये वाला पॉइंट समझ आया एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स का? Okay, so next point, suppose that if we are saying that we should be at E1, but suppose we are at this A dash and B dash. Now this B dash is aggregate demand and this A dash is output. In this case, we can see that output is greater than aggregate demand. Since A dash is lying above this B dash, A dash हमारा production curve है and B dash हमारा aggregate demand curve है. So we can say that all the points towards the right hand side of the equilibrium represents excess supply of goods. Hence, अगर हम यहाँ पे कहीं पे भी लाई करते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा अगर इक्विलिब्रियम लाइन पे नहीं है, उसके राइट साइड पे है, then we say that there is excess supply of goods because the output is greater than the aggregate demand in the economy. Now is it clear, Mehul? पक्का? अगर डाउट है तो अभी भी पूछ लो, फिर आगे नहीं समझ आएगा.
Okay, now this diagram has become very messy, but even then I'll try to share the PDF with you. So next we need to discuss is the shift of the IS curve. What are the factors that leads to the shift in the IS curve? So yeah, shift in IS curve. Now we know that whenever there is change in any of the factor which is not mentioned on the y-axis, it actually leads to the shift in that particular curve. जैसे कि हमने बोला है, आपने माइक्रो में डिस्कस किया होगा कि अगर हमारा प्राइस सेम रहता है और इनकम चेंज हो जाती है या सब्सटीट्यूट्स के प्राइसेस चेंज हो जाते हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है, मूवमेंट नहीं होती है, विच मीन्स कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है जो IS कर्व को शिफ्ट करेगा विच डज नॉट लाई ऑन दी वाई एक्सिस. अब हम IS कर्व की बात कर रहे हैं तो हमें पता है IS कर्व पे तो इंटरेस्ट रेट आता है वाई एक्सिस पे, इसका मतलब इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा और कोई और फैक्टर चेंज होएगा जिसकी वजह से IS कर्व शिफ्ट होएगा. नाउ दैट फैक्टर can be an investment, autonomous investment, exogenous investment, or it can be change in the government expenditure. For simplicity, we are assuming suppose कि हमारा government expenditure increase हुआ है. Suppose पहले अगर government expenditure 200 था तो अब government expenditure 400 हो गया है. Now again for this guys, these are again vertical diagrams. You need full one page for this. So please start from a fresh page. Again, we first need to draw this equilibrium. ये तो आप लोग साथ साथ draw कर सकते हो. Please draw along with me so that some time is saved. So in the goods market equilibrium, we take Y, aggregate demand. This is the production level, production curve, and this is the aggregate demand AD1, which represents C plus I plus G1 when the government expenditure is 200. This gives the equilibrium level E1, Y1, and intercept over here will be A bar minus BI1. We will plot this in the IS curve. So this in the IS curve, we take income on x-axis and interest rate on y-axis. So this interest rate is suppose I1. So at this I1, through the goods market equilibrium, using aggregate demand, we have achieved the output and income level at Y1. So this represents E1. This is the original situation right now in the economy. अभी current time period पे ये original situation चल रही है. I hope things are clear till here. Now we are saying suppose there is an increase in the government expenditure. Okay, can anybody quickly reply when there will be an increase in government expenditure from G1 to G2? What will happen to the aggregate demand curve? Please quickly reply. Aggregate demand curve कैसे respond करेगा अगर government expenditure increase होता है तो? Please quickly reply guys, I'm waiting. Rightward shift? Upward shift, yes, it will be an upward shift. प्रथम ऋतिक rightward shift इसमें आप कैसे explain करोगे? It is an upward shift. So थोड़ा उसको देख के करो, aggregate demand के बारे में बात कर रहे हैं, right? So upward shift, so this will be an upward, this will be an upward shift. So this is aggregate demand 2 C plus I plus G2 such that this G2 is greater than G1. And in this case, we are saying that since this G is the component of A bar. तो अब ये जो हमारा A bar था, this A bar was 1, A bar 1, पर जैसे मैं इस एक मिनट टिल्ट कर रही हूँ, I'll just zoom it in. Yes, I think now it will be more clear. So this G1, this was actually A bar. A bar का component होता है government expenditure as we know. So हम यहाँ पे बोलेंगे ये A bar 1 है. Next will be A bar 2 because government expenditure has increased. Thus the autonomous expenditure has increased minus BI1.
इंटरेस्ट रेट तो चेंज नहीं हुआ है ना, सो दिस विल बी BI1 एंड दिस point represents equilibrium in the economy, the new equilibrium in the economy, taking into account the new autonomous expenditure which was increased due to the increase in the government expenditure. So this will give us the new output equilibrium output level, that is Y2. That is Y2. Guys, are we clear with this first part of this diagram? कि हमारा G2 इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनॉमस कंपोनेंट का पार्ट है, तो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हमारा अगर पहले ऑटोनॉमस कंपोनेंट इतना था तो अब हमारा ऑटोनॉमस कंपोनेंट इंक्रीज हो गया है. दिस रिप्रेजेंट्स द चेंज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये जो इंक्रीज इन इंटरसेप्ट है, दिस इज एक्चुअली द चेंज in government expenditure. So due to the increase in the autonomous expenditure, there has been an increase in the aggregate demand, which has led to an increase in the output and income in the economy. Guys, are we clear till here? Are we clear with this diagram? Yes, ma'am. Okay. मैं ड्रॉ करने का टाइम बच्चे आप लोगों को दे दूंगी, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड बी रिस्पॉन्सिव. सो ओके, सो नाउ वी जस्ट नीड टू join this point. As we know that interest rate has not changed, interest rate is same, but even then there is an increase in the output level, that is Y2. तो जो हमारा original IS curve tha, say origin, this is our original IS curve, there is a shift in this, wait, there is a shift in this IS curve. This represents the shift of the IS curve. This was IS1, this was IS2. जैसे हम लोग प्राइस डिमांड के फंक्शन में बोलते हैं कि हमारा प्राइस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हमारा सेम है, बट IS कर्व शिफ्ट हो गया है ड्यू टू द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. गाइस, आर वी क्लियर विद दिस शिफ्टिंग पोर्शन? मुझे इसमें कुछ और भी बताना है. आई हैव टू टेल यू, दी विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इन दिस केस, बट बिफोर दैट आई वांट दैट दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्लीज ड्रॉ इट and let me know when you are done drawing. Please let me know when you are done drawing. इसको draw कर लो. I hope it is clearly visible. Done, Madhusudan? Okay. I appreciate the fact that Madhusudan, Hemant and Karan, you have done drawing the diagram. But I would again like to urge that when we are discussing, please pay attention to the discussion. कहीं पे भी एक पॉइंट मिस हो जाता है तो बाद में समझने में प्रॉब्लम हो जाती है. डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं हमेशा टाइम देती हूँ आप लोगों को. ओके, सो Diva, Vidhi, are you guys done? Let me know when you are done. Yes, Vidhi, we are waiting, don't worry. Okay, Banan. All right. So अब आप एक चीज देखो आप लोग कि कि हम लोगों का जो चेंज हुआ है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में, वो ये चेंज हुआ है, से दिस इज पॉइंट ए एंड से दिस इज पॉइंट बी. बट जो हमारा एक्चुअली आउटपुट में चेंज हुआ है, दैट आउटपुट चेंज इज फ्रॉम दिस E1 टू दिस से C पॉइंट. तो जो हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर चेंज हुआ है वो हमारा E2D चेंज हुआ है. सेम है ना ये, दिस E2D इज एक्चुअली इक्वल टू AB. बट जो हम लोगों का आउटपुट में चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है कितना? When we are talking about this output level, this is E1C.
E1C, we can clearly see that this E1C is greater than E2D. वो तो हमें दिख ही रहा है that E1C is greater than E2D, which means कि जो हमारा इनिशियल इंक्रीज हुआ है गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, इनिशियल इंक्रीज कौन सा है हमारा गवर्नमेंट स्पेंडिंग का, दिस इज E2D, that is this is change in the government expenditure, but our change in output, that is change in Y, is greater than change in the government expenditure. This is happening due to the, जो हमने बोला था ना, y is equal to a bar minus bi divided by 1 minus c plus ct. So this is happening due to this multiplier. कल हमने ये मैंने आपको लिखवाया भी था that 1 divided by 1 minus c plus ct is actually दी गवर्नमेंट मल्टीप्लायर. अगर हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, अगर हम ये बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो मल्टीप्लायर यही होता है, बट हम उसको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोल देते हैं. तो ये जो हमारा एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ है आउटपुट में, दिस इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ मल्टीप्लायर. नाउ वी नो, यहाँ पे जगह नहीं बची है, I'll write it on the next page. We know that multiplier is actually then, multiplier की amount कितनी होएगी, change in y divided by change in the autonomous expenditure. कितना हमारा आउटपुट एक्स्ट्रा चेंज हुआ है with respect to the change in autonomous expenditure. So we can say that this shift in IS curve, the shift in IS curve, that is the change in the output. हमारा ये जो IS कर्व शिफ्ट हुआ है, ये भी तो हमारा आउटपुट ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना. दिस चेंज इन द आउटपुट y2 minus y1 इज एक्चुअली रिफ्लेक्टिंग कि हमारा IS कर्व कितना शिफ्ट हुआ है. सो दिस शिफ्ट इन द IS कर्व, दैट इज चेंज इन आउटपुट, इज एक्चुअली मल्टीप्लायर टाइम्स ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर. और यहाँ पे हमारा वो ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर जो हुआ है, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज होने की वजह से हुआ है. सो दिस यू कैन सी, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यही आएगा ना, डेल्टा वाई चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू मल्टीप्लायर टाइम्स डेल्टा ए. So we are saying this shift in the IS curve is represented by delta y, that is multiplier times the change in autonomous expenditure, that is multiplier times the change in government expenditure. So we represent multiplier by this. So multiplier ka equation is 1 minus c plus ct into delta g. Guys, is this clear? Is this clear? Is it clear, guys? I'll give you time to write.